Again, I would like to say Om Shanti. Today's topic is balance of remembrance and service. How to gain blessings through the balance of remembrance and service. I think all of you are old in Brahmin life. Those who are in the knowledge since 1 year, please raise your hands. Since 1 year. 6 months? There are 1 or 2. So rest of them should be above 1 or 1.5 or 2 years. You must have understood by now. Service means to give happiness to others. The real meaning of service is this. Whoever I serve, that soul should experience happiness through that service. And automatically they give good wishes or blessings or thanks from the bottom of their hearts. Remembrance means recognition of the self, to stabilize in the eternal original state, and to remember the Father, to develop the relationship with the Father. This is remembrance. This remembrance evokes the powers from within. It makes the soul powerful. The soul is embodiment of knowledge, embodiment of peace, embodiment of happiness, embodiment of power. Through the awareness of these stages, we stabilize in the stage and we experience deep happiness. And we stabilize in remembrance and then serve others. So the basis of our service is remembrance. Our intention of doing service is to give the introduction of the Father to all the souls, so that those souls recognize the Father and experience happiness, because now they have forgotten the self, forgotten the Father, and that is why they are experiencing immense sorrow. They need to experience the power from the Father so that they experience peace and happiness in their life. Our main intention to do service is to again remind them of their own self, because they have forgotten the self, forgotten the Father.
Because of not having that relationship with the Father, whatever they do, whatever they do actions, their wishes would not be fulfilled. आत्मा स्वयं के सच्चे स्वरूप तक नहीं अनुभव करती है, unless the soul does not experience its original stage, सुख की बनी रहती, its desire for peace and happiness would always be unfulfilled. मनुष्य यह नहीं जानते हैं कि यह सुख की इच्छा, शांति की इच्छा आत्मा को है, ये मनुष्य नहीं जानता है. People do not know that the soul wants peace and happiness. भिन्न भिन्न साधनों से And that is why शांति लेने का प्रयत्न, they try to experience peace and happiness in the physical form रीति से through different facilities. जो हम आत्माओं को समझाया है, Now, Father has explained to us अनुभव कराया है, and has made us to experience इस बात को जान चुके हैं कि वास्तव में आत्मा शांति He has made us to experience that सुख क्यों है, क्यों उसको शांति की why the soul wants peace and happiness. क्यों चाहती है. Why does the soul wants happiness? शरीर में है, परंतु शरीर के द्वारा जो भी कर्म करते हैं, Whatever actions that we perform through our body, चैतन्य शक्ति आत्मा, it is the eternal soul which performs these actions यह through this body. हमें बाप के द्वारा मिलने के कारण हम इस बात को अच्छी रीत से समझते हैं कि मनुष्य अपनी इच्छा के अनुकूल जो भी प्रयत्न कर रहे हैं, Whatever the human beings are trying in order to experience happiness, they are not able to experience complete success. वो न स्वयं को जानते हैं, न The main reason for this is that they do not realize the self and they don't recognize the Father. मूल लक्ष्य कहे, The main आधार कहें, basis यही है. or main intention of our service is बाप का परिचय देते हुए अथवा बाप की महिमा बताते हुए to लोग वास्तव में give सच्ची मन की शांति, the introduction of the लोग तो Father. ये नहीं जानते The हैं main ना thing आत्मा को is चाहिए, peace of लोग तो mind. ये मन की शांति चाहिए. People do not realize that the soul needs peace. They say the mind needs peace because whatever the facilities they have, they are not satisfied with those facilities. कारण यही है कि आत्मा की जो अंदर की शक्ति है, The basic reason for this आत्मा is की that जो अंदर की पहचान है, आत्मा का जो अनादि रूप the में awareness of the बाप soul से संबंध था, वो न होने के कारण and the original relationship that we had before with the Father is no more. उससे संपूर्ण रीति से संतुष्ट नहीं हो पाती And that is why the souls are not getting completely satisfied. जिस बात की हमें प्राप्ति चाहिए और अगर वो हमें प्राप्त हो जाता है, Whatever we want to attain, संतुष्ट हो जाना if we चाहिए. attain that, we get उसमें satisfied. हमें आनंद सुख का अनुभव होना We, चाहिए. we have to experience peace and happiness if we attain whatever we want to attain. प्राप्ति होने से But in the world, we see that whatever they attain, इच्छाएं बनी रहती, they always have desires यही है to attain more. जिसको वे स्वयं नहीं पहचान पाते The हैं. reason is they do not realize the self. बाप के द्वारा यह नॉलेज मिली है, But तो हम इस Baba बात को has जानते हैं. given the knowledge about this to us. आत्मा
तब ही संतुष्ट होंगी And we know जब that उनको अंदर the जो soul उनका gets ओरिजिनल satisfied रूप है, only सत्य स्वरूप है, when the soul जो stabilizes उनकी in its शक्तियां हैं, original true जब form. तक उसका अनुभव नहीं हुआ है तब Unless तक we don't प्रयत्नशील experience ही our रहेंगी original true और तब self, तक उनकी इच्छा we बनी remain रहेगी। dissatisfied and we continue to इसलिए have हमारे more लिए भी desires. पहली मूल बात यही होती And that is है why the कि first हम basic स्वयं thing for the self स्वयं को पहचान is अर्थात to हमें तो बाप के recognize the द्वारा self. स्वयं की पहचान मिली है। Baba उस has given us पहचान our से own हम उस introduction, स्वरूप में स्थित रहकर and on the basis जितना of that, जितना we हमारा need to बाप stabilize in से that stage, संबंध जुटा हुआ होगा। and we need to connect संबंध with the कहने का Father. अर्थ है To जो connect कुछ with the बाप Father हमें means शिक्षाएं देते हैं, whatever teachings जो कुछ that बाप Baba हमें gives us, बताते रहते हैं, whatever Baba जिसको एक says to शब्द में us, कहें, जो बाप से हमें श्रीमत मिलती whatever है, Shrimat तो जब that हम Baba gives आत्माएं us, मानती हैं परमात्मा मेरा पिता है, बाप and है, we follow that तो Shrimat, बाप की and हर आज्ञा हर शिक्षा को पालन करते we हम follow अपने each जीवन one में of those आगे बढ़ते directions रहें तो and move सही forward माना in our में life, हम अपनी जीवन में भी सुख और शांति संपन्न and then जीवन we व्यतीत would कर सकते हैं। really experience योग peace and happiness in our सर्वशक्तिमान lives, पिता को पहचाना और उसके साथ because we have मुझा आत्मा recognized का the संबंध Almighty जुड़ा हुआ authority है। and we have जब connected with हमारा Him. संबंध सर्वशक्तिवान बाप विश्व कल्याणकारी पिता के साथ है When तो I'm स्वाभाविक connected है with उस the पिता की Supreme हर बात Godfather, को हम मानते जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे और and जबकि we पिता move की forward हमें यही on His आज्ञा है, Shrimat, बच्चे जैसे तुमने अपने जीवन को बनाया है, जैसे अभी तुम्हें स्वयं की पहचान और बाप की पहचान मिली है, इसी प्रकार से आज के मनुष्य मात्र and to the बहुत extent अंदर से the way we are दुखी connected और with the Father, अशांत हैं। we need to make उनको others जाकर have के that connection ये with the Father, शांति का सच्चा because रास्ता they are बताओ experiencing जिससे वो immense जब sorrow बाप out को there. पहचान करके मेरे से वही Because Baba बेहद says that सुख when का they वश recognize बने, me, then उसी बाप they के claim the inheritance आज्ञा to अनुसार कहें my अथवा आदेश अनुसार जब हम property. आत्माओं की सेवा करते हैं, When we serve the जिनकी भी souls, हम सेवा करें, whomever we हमारी serve, दृष्टि के अंदर यह बात पक्की रहे we need to कि have हम in इन the drishti आत्माओं that को बाप का संदेश दे रहे हैं। we are giving God's यह message to आत्मा them. We are अपने giving them बाप को God's message. पहचान ले Let this तो soul recognize तुरंत his अपने Father आनंद और सुख का अनुभव करे। and experience ऐसी शुभ भावना, immense happiness and bliss in ऐसी their life. कल्याण की भावना Such good उनके wishes प्रति जब and हमारे मन के अंदर blessings, जागृत रहती हैं और उन्हीं if भावनाओं such से जब good हम उनको wishes समझाते are हैं in the emerged तो form हमारे and we समझाने explain का Baba's तरीका भी knowledge बड़ा to them with this रूहानी intention, स्नेह with these संपन्न good हो, wishes, then तो वह रूहानी they स्नेह experience ही that spiritual उनको love. आकर्षित करता है। And this spiritual क्योंकि love, यह भी हम जानते हैं on the basis of हम this spiritual सब love, आत्मा they are attracted एक towards पिता the की Father. संतान होने के नाते हम सब एक परिवार है, ईश्वरीय परिवार है। We belong to one तो family हमारी because दृष्टि के we अंदर, are all souls and we are हमारी connected with one भावनाओं Father. के अंदर इस प्रकार की बातें, इस प्रकार की भावनाएं
इस प्रकार की सूक्ष्म दृष्टि हमारे अंदर समाई हुई होने से When we have और such उन्हीं good wishes भावनाओं and से subtle vision, जब हम मनुष्य आत्मा की सेवा करते and we हैं serve with तो these उससे intentions, उनको शांति और आनंद they का अनुभव experience होता है। peace तब and उनके bliss. अंदर से वह दुआएं कहें Then अथवा थैंक्स निकलते हैं, they अर्थात say अंदर ही thanks from the अंदर वो bottom of the खुश heart, होते हैं कि यह बात जो हम नहीं जानते थे and they would उस बात की जानकारी हमें understand मिली है that और they उसको have आगे बढ़ाने का got the प्रयास knowledge करते हैं। of what they उसी didn't प्रकार know about. जब हमारी सेवा के अंदर यह लक्ष्य होता है, इस लक्ष्य से हम जितनी भी सेवा करेंगे With एक this तो बड़ी intention, खुशी से सेवा करेंगे, no matter how much दूसरा we serve, सेवा में हमें we थकावट serve with happiness, तीसरा and secondly, जितना we जितना क्यों don't अगर get हम tired, स्नेह से और and खुशी से thirdly, सेवा करते हैं तो उसका प्रभाव उस आत्मा के ऊपर the जल्दी soul ही पड़ता है whom we कि वह serve हमारे अंदर उसके प्रति gets शुद्ध influenced by होता our है service because और we हमें have अंदर that ये स्मृति enthusiasm, है that energy within us. बाप ने जो कहा है, बाप ने जो आदेश दिया है, उस आदेश के अनुसार हमें इन्हों को बाप का परिचय देना है। According to the directions of the इसमें Father, अपना स्वार्थ we कुछ have नहीं to give रहता the है, message of Baba अपने to all. प्रति कुछ We लेने don't की have इच्छा any नहीं selfish रहती है, motives जिसको behind फिर it. कहा जाएगा I don't निस्वार्थ want भावनाओं anything से from हम those उनकी souls. बड़े प्रेम से सेवा करते हैं। We do बस service कहने में with ये आएगा selfless भाई हम उनको motives. समझाते हैं, लेकिन समझाने में When we हमारा explain भाव Baba's यही knowledge रहता to है others, हमारा भाव यही रहता है कि यह आत्मा अपने आप को when we पहचाने। explain Baba's आप knowledge to सोचो others, let our intentions be अभी अंदर pure, में इस बात that को let इमर्ज this करने soul दीजिए। recognize the Father. जब हमारे अंदर ये भावना है, When यह we आत्मा have अपने आप these को good पहचाने, wishes and good अपने बाप intentions, से फिर से वो अपना अधिकार ले ले। let this soul जब claim इन्हीं शुभ complete भावनाओं inheritance से from हम the उसको Father, बात करते हैं और समझाते हैं तो उस आत्मा को भी वो आकर्षित करता है and that और soul उसकी also भी get दिल होती है, उसको समझ attracted में आता towards the है कि Father नहीं ये बात बरोबर थी। and तो accept सेवा के Baba's लिए knowledge. पहली बात तो हमें अपने अंदर For इन भावनाओं doing को good सदा service, जागृत first रखना of all, है। we need जिस to प्रकार have से these बाप के intentions लिए in गाया the जाता emerged है form. कि बाप निष्काम सेवादारी। Baba बाप देखो is selfless इतना server. ऊंचा बनाता है, Baba makes परंतु us so बाप को elevated. हमें इतना ऊंचा बना करके हमें स्वर्ग की राजाई दे देता है Baba और makes us so स्वयं elevated and gives us the स्वर्ग में kingdom of the heaven. आता भी नहीं है। But he स्वर्ग के himself सुख doesn't come खुद to नहीं heaven. भोगता He है, doesn't परंतु experience the सब happiness of कुछ heaven. बच्चों को दे देता है। He gives everything to his children. इसलिए कहा जाता है बाप तो बड़ा निष्काम सेवादार And है। that is बाप why कहते it is हैं said that मेरे Baba जैसा निष्काम is the सेवादारी most कोई नहीं। selfless server. तो बाप का यह There is गुण no one other than Baba संगम who पर is such a selfless server. हम मनुष्य आत्माओं को अर्थात हम उनके बच्चे हैं। We are his children. बच्चे के नाते हमें दिल के अंदर इस भावना को जरूर जागृत करना है। And being children of बाप Baba, के समान we need हम to भी जिन्हों have की सेवा these करते हैं, feelings that we need उस to do सेवा में service हमारा like the स्वयं Father. के प्रति कोई भी
स्वार्थ भाव से। Let me not have any selfish motives. पहले तो हम बड़ी शुभ भावनाओं से, इन्हीं भावनाओं से सेवा शुरू करते हैं। First, when we start doing service, we have these pure intentions. When we expand the service, sometimes जिसको मेरापन कहते हैं ना, sometimes the consciousness of mine arises. I have done this. कहाँ इमर्ज हो सकता है, This consciousness emerges sometimes, इस बात का अटेंशन है। but we need to pay attention to हमें this. यह बात सदा याद है, करण करावनहार तो बाप। We need to remember that the one who is making us to do is Baba. Karan Karavan और is करते भी Baba. किस लिए हैं? इन सब का संबंध हमें बाप से जुड़ाना है, अपने से नहीं। I need to help them, help those souls to get connected with the Father and not connect with me. When we give Baba's knowledge, they get impressed by us and say they speak very sweetly, they explain the knowledge very well. They get impressed. इसीलिए हमारे अंदर वह भावना रहे कि बाप के बच्चे, ईश्वरी परिवार। But even then, let us have the feeling that let these souls get connected with the Father so that let them experience peace and happiness, because these souls are experiencing immense sorrow. Let these feelings be in the emerged form constantly. निस्वार्थ भाव, क्योंकि आजकल मनुष्य दुनिया में In the world, जो एक दो की सेवाएं करते हैं, when the people तो serve each other, परिचित हो गए हैं कि जो भी सेवा करते हैं तो उनका अपना कुछ न कुछ स्वार्थ होता ही है। and there is some selfish motive behind doing service. तो वो निष्कामता अर्थात निस्वार्थ भाव वो भी उनको आकर्षित करता है। When we serve with selfless motive, then they get attracted एक तरफ ये because we are detached. से समझ जाए तो उसके लिए हम समझाने की मेहनत जरूर करेंगे। We would definitely make efforts to explain Baba's knowledge clearly. We would make efforts definitely. समझ में आती है तो भले पूछो, अच्छी रीत उसको समझो और अनुभव करो। If they don't understand, we try to make efforts to make them understand in a clear way. But internally, let our intentions be that let the soul recognize the Father and experience happiness and bliss in their life. जिसके अंदर हमें बाप की याद समाई हुई है, when remembrance is merged in the service, that Baba is a Karan Karavanhar who is the one who is making us to do this service, then we are detached. This is the end of the cycle. All the souls have to go back home. When all these souls have to go back home, so let them also recognize the Father and go back home along with the Father. Let us remember these things in our minds constantly whilst doing service. And then we would definitely experience success very easily. And that service would make us experience happiness. And whilst doing service, we would be very light and do not experience tiredness. When others experience happiness through me,
when others attain from Baba through me, then there is no tiredness. ये भी जब हम सेवा करते हैं, कहने में आता है कि दूसरे की सेवा करते हैं, It is said परंतु हमारे that we भावना are के doing अनुसार service of बाबा others, ने जो कुछ हमें समझाया but है, it is बाबा actually जो हमें शिक्षाएं देते हैं, उन according to शिक्षाओं को Baba's याद करके teachings. जब हम ये सेवा करते हैं, तो हमें ये नहीं लगेगा हम दूसरे की सेवा करते हैं, It is not the हमें service ऐसे of लगेगा others. हमारी ही आत्माएं, मना हमारा ही परिवार, बाबा के बच्चे It is जो भूल गए हैं, Baba's family. It is our family. It is my तो family. अंदर में एक रहम भावना, Then शुभ there भावना, is उनके प्रति the कल्याण feeling of mercy, भावना, feeling जब of ये bringing भावनाएं benefit to अपने अंदर में others. आती है, वो भावनाएं When we have हमारे these अंदर feelings, रूहानी स्नेह जागृत करती these feelings है, और जब वो help रूहानी us स्नेह हमारे to अंदर give जागृत spiritual होता है, love to तो others. स्नेह संपन्न सेवा हम उसको पराया समझ के नहीं करेंगे, We don't serve them, considering them to be someone outsider, बाबा but ने उनको भेजा है, we consider शब्दों them में to वर्णन be करते belonging to हैं तो Baba's समझ family. आता है, Baba has परंतु sent them, जब it is सूक्ष्म Baba's में हमारी child, ऐसी भावनाएं बन जाती हैं, तो वे भावनाएं स्वयं को भी सुख देती हैं, and those feelings would give happiness to the self खुशी से किससे बात as well. खुशी खुशी से किसको कुछ When दो, we speak to others with तो happiness, उनको खुशी when we भी give होगी something to और others उसकी with वैल्यू happiness, भी and that उसको thing has a प्राप्ति value, अनुभव होगी। that soul would experience the इसी attainment. प्रकार से हमारी याद और सेवा ये बैलेंस बना रहे, Then there would be याद the का balance मतलब ये of भी नहीं है remembrance केवल and जिस समय service. हम सेवा करें उसी समय याद करें, It is not just that when we do यह service, we have याद to तो remember ऐसी Baba. है, This remembrance is such इसका that जितना अभ्यास हम to the निरंतर extent करते we practice constantly, निरंतर अंदर इसकी लगन लगी हुई हो, constantly we are तो वो remembering याद Baba, समय पर अपना काम करती, that remembrance would work, वास्तव would में help us on इस time. समय कहे, अभी हम लोगों को इसी बात का ध्यान रखना जरूरी है, We need to pay attention to निरंतर this याद at the और moment. वो भी That is powerful याद, constant remembrance अर्थात and powerful हर remembrance. That means each समय, second, each हर second, कदम, each बल्कि step, कहें हर each श्वास, action, कहा जाता है each breath. श्वासों श्वास, श्वास नेचुरल चलता है, अपने आप चलता है, We take breath, we breathe आपकी naturally. याद ऐसी बन जानी चाहिए जो जैसे कि अपने आप याद है ही, जैसे Baba's जब हम remembrance समझाते should हैं, become that तो मिसाल में कहते हैं ना, जैसे we remember लौकिक में Baba naturally. माँ बाप और बच्चे, In the Laukic world, बच्चों को माँ we बाप की say याद बनी रहती है, that he is my father, माँ बाप को she is my बच्चों mother. की याद होती ही है, Constantly the children remember the इसी parents प्रकार and the से parents constantly जब remember the हम children. स्वयं को In the same way, आत्मा रियलाइज when I realize myself to be a soul, स्वयं को आत्मा रियलाइज करना ये एक अंदर अंदर की बात है, क्योंकि to स्वयं realize the soul हमारा मन और बुद्धि from within जो means आत्मा के साथ संबंधित है, क्योंकि आत्मा इसी मन बुद्धि रूपी सूक्ष्म शक्तियों से ही काम कराती है, the soul works through the mind and intellect. मैं So, आत्मा शांत स्वरूप हूँ, I, the soul, ये is an अनुभव embodiment of करने peace. वाली Who is the one who experiences this? कहेंगे आत्मा करती है, It is said पर that the करती soul इन चेतन experiences शक्तियों के द्वारा, these powers, but it experiences जब मैं through the स्वयं mind इस and अनुभव intellect. मुझे वो सिमरती है, When I am aware of this, तो ये मेरी चेतन शक्ति मन और बुद्धि
these subtle और powers, कोई और the subtle प्रकार का काम नहीं faculties, करेंगी, परंतु उनके अंदर वह शक्ति अर्थात शुद्धता की संकल्प चलेगा, शुद्ध then संकल्प there would चलेगा, be purity in ऑटोमेटिक the mind, the भिन्न thoughts, भिन्न प्रकार and से the intellect बाप की would also याद become आती pure. रहेगी, And constantly we are reminded बाप of की the Father. शिक्षाएं याद आती ही रहेंगी, लेकिन Constantly इस we बात का remember the teachings of पहले the Father. हमें अटेंशन दे करके इसको सदा हमारे चिंतन के अंदर यह धारा बनी रहे, We need to pay भल हम attention काम काज कुछ and भी करते रहें, put the teachings of the Father in our thoughts, thought pattern, so that it comes up constantly in our minds. परंतु वह करते हुए जितनी ही मैं आत्मा सूक्ष्म हूँ, To the extent the soul is so subtle, इतनी सूक्ष्म हूँ जो दिखाई नहीं पड़ती हूँ, it is so subtle that we are not able to see the सोचने soul. पर, समझने पर, When we think about it, याद करने पर भी जल्दी से उसका अनुभव नहीं कर पाती हूँ, इतनी तो सूक्ष्म हूँ। I'm so subtle that even if I want to हमें experience स्वयं it, को it is a bit difficult to इतना experience सूक्ष्म myself. अर्थात शरीर की कर्मेंद्रियां तो दिखाई पड़ती है, The organs of the body are seen, उसको हम they are नाकों से physical. देखते हैं, समझते हैं, उसी प्रकार से काम कराते हैं, We see them through these eyes and परंतु make them हम work on the physical level. स्वयं को अंदर यह अनुभव करें, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, जिस The शक्ति के energy आधार who is से controlling this body संकल्प is the शक्ति soul, काम करती है, and to ज्यादातर control this आत्मा body, का रूप the लाइट है, power of the thoughts work. स्थूल लाइट नहीं, परंतु वो Soul प्रकाश is a light. ज्ञान का प्रकाश कोई प्रकाश के रूप में दिखाई नहीं पड़ेगा, The light of the knowledge knowledge. को भी लाइट कहा जाता है, Knowledge is known as light, and that light of knowledge cannot be seen on the स्थूल रूप physical तो level. ऐसा आकार बना हुआ है, आत्मा का आकार रूप में कुछ नहीं बना हुआ है, And the soul also does not have a physical form. It is a subtle power. जिसका रूप लाइट माना पावर, रोशनी, प्रकाश, It is light. जागृति, There is awareness. जो मन और बुद्धि के द्वारा काम कराती है, And the soul तो work सदा through the mind हमारे and intellect. मन में अर्थात हमारे संकल्प में, हमारी स्मृति में, So constantly in our हमारी thoughts, समझ in के our अंदर awareness, in our हर understanding, समय every केवल moment हमें इस बात का अटेंशन रखना we है need to pay attention कि अंदर constantly जो मेरा that चिंतन चलता है, whatever thought patterns that I जब create, कोई ऐसा काम है, काम के प्रति भी हम विचार करते हैं, we think काम about के our प्रति जितना actions आवश्यक है उतना विचार also. किया, We definitely would do that. बीच बीच में But in between, वह सूक्ष्म रीति से यह शुद्ध संकल्प अथवा बाप की याद जो एकदम हमें अंदर रूहानियत जागृत कर लेती है, but in between, I need to इस get प्रकार से engrossed, अगर हम थोड़ा go into the अपने depth of पर Baba's attention remembrance, रखते हैं, so that the spiritual और वो power attention हमारा gets evoked. अंदर अपने को जागृत करता रहता है, अर्थात स्मृति स्वरूप बनाता जाता है, This तो remembrance वह would स्मृति make हमें our हर awareness is समय powerful, मदद करती रहेंगी, and constantly they would अर्थात help जितना us. जितना समय हमारे अंदर स्मृति जागृत होंगी उतना ही आत्मा शक्तिशाली बनती जाएगी, To the extent my awareness becomes powerful, to that extent my thoughts and actions would become powerful.
And that is why हमें दोनों बातों का बैलेंस भी रखना है, we क्योंकि need to have शरीर में balance कर्म इंद्रियां of हैं, both the तो remembrance कर्म and इंद्रियों को भी service. काम में लगाना है। मुख है तो मुख को काम में तो We have the लगाना ही body है। and we have to use तो our अपनी body in service. दिनचर्या के अनुसार और सृष्टि नाटक के अनुसार According to our शरीर है daily तो routine, शरीर की according रुगति to the बनी हुई cycle, है, और उस रूटीन के साथ साथ हमें फिर अंदर अपने along आत्मा with की the physical शक्ति को फिर activities, से जागृत करने के लिए we have जो to बाप से हमें evoke नॉलेज मिली है, the spiritual उसका powers जितना from within. चिंतन अंदर करते रहेंगे, उतना याद का स्वरूप हमारा स्पष्ट होता For जाएगा। that, we need to have the power हम of स्वयं remembrance. के स्वरूप का अनुभव इस प्रकार से करते रहेंगे, जैसे मैं आत्मा अंदर में चेतन शक्ति जागृत हूँ और मैं ही अपने मन बुद्धि को And चला then रहा हूँ। I would मन में क्या constantly संकल्प होना have the चाहिए, awareness that I am an उस eternal अनुसार soul हम and अपने I मन am से काम working ले रहे through my हैं। mind and ये intellect. तो अपने अभ्यास पर मदार है। This जितना again जितना depends अभ्यास, on जिस our प्रकार practice. से हमारा अभ्यास, जितना हमारा अटेंशन, Uh, और उस this अटेंशन depends on में the भी practice and attention. देने पर भी अटेंशन। इसका मतलब ये है I need to pay कि attention to सारे दिन myself में and also pay हम जो and अटेंशन देते हैं, help उसकी others to have रिजल्ट क्या attention. हुई, बरोबर हम इसमें कितना सक्सेस हुए, And throughout the day, ये भी when I pay तो जब attention, घर में रिजल्ट then देखते I need रहे, to see the तो result हम at the सहज end of the day, अपने that को आगे बढ़ाते जाएंगे। to what और extent this हाँ, helped me. इसी प्रकार याद के साथ सेवा का बैलेंस रखते हुए, अर्थात सेवा भी करते रहें, क्योंकि बाप ने का आदेश है। Baba और जो has कुछ given us the हमने दिया है directions वो किस to लिए, do the बाबा हमें service. किस लिए देता है? Why does वैसे Baba तो give anything कायनात to है, us? मनुष्य जीवन है, केवल अपने लिए नहीं। This human life जीवन is not just for जो myself. अपने लिए जीता है, Those उसको who क्या कहते हैं? live for themselves, what are they called? मनुष्य जीवन वह सफल मानी जाती है Human जो life दूसरों की is सेवा करे। successful और only when नेचुरल नियम they भी serve ऐसे, जीवन का others. नियम ही ऐसा बना हुआ है। चलो बचपन बीता, बचपन में भी देखो माँ बाप बच्चों की ही सेवा करते In the हैं, childhood, और parents फिर हम serve the बड़े होते children, हैं तो and माँ when the बाप की children सेवा करते हैं। इसी become प्रकार से big, ये then the children क्रम serve the सृष्टि का parents. ऐसा बना हुआ है, जो एक दो की सेवाएं करें, So क्योंकि this संबंध है nature हमारा। is like that, संबंध that होने we के serve कारण each एक other. दो के साथ है, Because we एक दो have that के साथ relationship. ही चलते हैं। When we have that इसलिए relationship, then we जैसे move along with स्थूल में them. ये परिवार की सिस्टम है, वैसे ही हम परमात्मा के बच्चे हैं। ये हमारा सारा बेहद का And now परिवार we है। are connected हमें on a, सदा बाप on a के different साथ level, ही रहना that है। we are the जैसे हम children अपने of परम God दाता बाप के साथ and रहते we हैं, belong to one तो अब family. हम इतने समय Just से like गुजर गए, अब हम फिर we से stay जब in बाप Paramdham आकर के हमें together पहचान in the करके same अपने way, साथ ले जाने here के लिए आए हैं, तो also we are क्यों नहीं connected सभी together. बाबा के बच्चे बाबा को पहचान करके साथ लेके अथवा So हाथ we में need to हाथ help लेके each other बाप के to साथ recognize the चले। Father ऐसी and शुभ go भावनाओं along से जब हम them, सेवाएं along with करते them, हैं, तो वो take them along सेवाएं with us. उन्हों को भी असर करती है, सेवा वो सफलता With देती है। when we have these खुद pure को भी intentions, खुशी होती है then और others ऑटोमेटिकली get जब attracted उन्हों को towards सुख Baba मिलता and they है और experience बाप happiness. को पहचान करके गदगद हो जाते हैं, तब फिर उनकी वो आशीर्वादें निकलती है। And then इसको कहा they जाता है bless us याद और from the bottom सेवा के of their hearts. बैलेंस से This is known as ब्लेसिंग के पात्र बन। to have blessings इसी with the प्रकार से हम balance अपने of इस remembrance ईश्वरीय and जीवन service. में चलते हुए स्वयं को भी, अर्थात Whilst आत्मा को भी whilst moving शक्तिशाली along बनाते like this जाएं, on a spiritual path, बाप के the शिक्षाओं soul के becomes powerful. अनुसार सदा हमें बाप की याद बनी रहे, आत्मा शक्तिशाली बनती जाए
और फिर Let there वही be the याद remembrance of the दृष्टा Father constantly, औरों को and the भी soul बाप का becomes परिचय powerful. देते हुए And on that बाप से basis, संबंध जुड़ा let us करके give the message जीवन of Baba में to others, ऐसे connect ही them with the सफर Father, करते जाएं तो and receive ये blessings भी from them बाप के and पश्चात experience करके success in our बाप lives. के साथ साथ चलने की तैयारी। And let us prepare ourselves to go इसी along with the प्रकार से Father. हम अपने इस ईश्वरीय जीवन में आगे बढ़ते रहें और Let us move सेवाओं forward में like व्यस्त this रह करके in our spiritual बाप से path, अपना अधिकार and let us प्राप्त करते claim आगे our बढ़ते rights to Baba's inheritance. ओम शांति Om Shanti. शांति Shanti. Soul जैसे is actually detached from this बाप तो body. प्रैक्टिकल में न्यारा ही है, Baba बाप is का detached सदा in the रूप practical form. वही है Baba जो is अति सूक्ष्म always a है, point of light परंतु who is हम very आत्माओं subtle, का रूप but वास्तव में वो है जो फिर जब हम and the शरीर soul का आधार also लेते has हैं that form of तो फिर point, शरीर के द्वारा but we take up the body जैसे जैसे कर्म करते हैं and we perform our वैसे actions फिर through our bodies, जन्म जन्मांतर का चक्कर लगाते हैं, and we परंतु take अब birth हमारे after चक्कर का birth, अंत है। and but ये this is the ड्रामा का last चक्कर हमारा birth. पूरा हुआ है। The cycle of अभी births हमें is come to an वापस end. जब ये हमें याद आता है, अभी हमारा चक्कर पूरा हुआ है, We तो have completed ये our हम cycle अंदर में and सिमरती we रखें have to go मुझ back home. आत्मा का Constantly remember शरीर को that धारण I am करके a soul, पाठ बजाने का समय अभी इस ड्रामा में चक्कर पूरा हुआ है। अभी हमको वापस बाप के साथ जाना है। I have completed my cycle इसलिए and I have to go back मुझे home along with the स्वयं Father. को अर्थात आत्मा को फिर से So the soul अपनी once ओरिजिनल again स्टेज has to सर्व stabilize in its original stage, बंधनों से मुक्त, free from all the bondages, सर्व देह के संबंधों से मुक्त, free from all the एक ही संबंध bondages of bodily बाप relationships. के साथ Let us have माँ और one relationship with the Father, Soul, and the इसी Supreme संबंध Soul. से हम फिर से अपने उसी शुद्ध स्वरूप I am an embodiment of purity, embodiment of peace, स्नेह स्वरूप बनकर embodiment of love. फिर से अपने बाप के साथ वापस अपने घर चले। So let us go back home ऐसी along स्मृतियों with the के Father. साथ हम फिर से अपनी याद की यात्रा चालू करते हैं With these और awareness, 7:45 let us stay in the remembrance. यह यात्रा We shall sit in remembrance till 7:45.